हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम। आज एक हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्ट्रीम। म्यूजिक नहीं चल रहा आज, चलाने भी नहीं वाला, साला लैग करना है। 1 घंटे पहले मैं इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि फिर ट्रेडिंग आराम से कर पाऊँ मेंबर्स के साथ। सो दैट इज दैट बॉयज। आई एम सॉरी, आई विल बी बैक ट्रेडिंग विथ यू गाइस वंस इन अ वाइल, बट हर रोज मैं नहीं कर सकता। हेलो। Join in. Uh, channel. रुक जाओ guys, I need to post link somewhere. Ans, you here my boy? पीछे हिरेन है। पीछे कौन है? हिरेन? नहीं बैठ, अरे बहन है तो he came to gift me my birthday gift after a month because birthday gift was delayed. He came to deliver today. हिरेन टक्कर भाई क्या? यस वही हिरेन है। डब्ल्यू यार, do you prefer to trade 9:30 open as a beginner? Yes, I would suggest that 9:30 open means ऐसा नहीं कि open पे trade ले लो, but I would like you to trade NY session, NYM session. That is the best session with the liquidity and everything. So yeah, let me show you guys what we took as trade yesterday. I think we took this short as long as I remember. इस एफईजी का इन्वर्जन हमने शॉर्ट मारा था yesterday with members, and we took something 23 points or something. It was a small, but again look at the move after that. So yeah, hello everyone. Yes, I do have a mentorship, but for now, for this month it is closed. It will open next month now. I prefer gold Asian session more than London session. By the way, I just got gifted this thing, so we're gonna try this out on streams, maybe not, but yeah, I haven't even opened it yet. Pair name is Nasdaq futures. I mean, NQ1 you can tell. Yes, we took the trade I showed you. Alright, let me get which one is left and right, whatever it is, but yeah. नहीं बोलूंगा भाई आदित्य भाई, is there any problem?
जब भी मुझे हिंदी बोलनी होगी मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो आप। इस 5K इज पॉसिबल टू ट्रेड 5K विथ 5K? Alright, so that was the gift. Alright, I'm gonna test it out later on. And let's get started with the market and questions. Okay, so yesterday I told you कौन सा ट्रेड लिया था हमने. अगेन आई एम जस्ट गोना एक बार दिखा देता हूँ कि एनालाइज कैसे किया था. सो ये रहा ना ट्रेड. yesterday we took this 1 minute inversion till this low कि इसकी 1 जम 1 भी हो रहा था, प्लस इसकी बॉडी की कैंडल नहीं थी, सॉरी बॉडी की वीक नहीं थी. सो वॉज वेटिंग फॉर स्वीप ऑफ दिस कैंडल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन, राइट. उसके बाद भी मुझे एक ट्रेड स्पॉट हुआ था लेटर ऑन कि ये हाई निकला था, सम प्रीवियस हाई भी निकले थे, पर मोर इम्पोर्टेंटली मेरे लिए ये 1 मिनट एफपीजी थी. इसके इन्वर्जन के बाद मैं शॉर्ट चाहता था एंड दैट्स व्हाट हैपन. लुक एट दैट इन्वर्जन हियर, पुल बैक इनटू IFPG एंड देन वी completely went to rebalance every open FPG. लास्ट तक हमने रीबैलेंस किया एंड रीबैलेंस करने के बाद वी वेंट अप, मेड दिस हाई एंड नाउ मार्केट क्या कर रही है इसेंशियली मैं बता देता हूँ कि ये पूरी रेंज है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई. इफ़ यू पुट फिबोनाची हम 50% पे आके वापस जा रहे हैं ऊपर, राइट. सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मुझे क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है, लिक्विडिटी इज अबव दिस हाई, ये हाई ये हाई ये हाई, वी गेट स्वेप्ट एंड देन वी कम बैक डाउन. ऐसा लग रहा है, ऐसी प्रेडिक्शन है, डजंट मीन कि ये होगा, नहीं भी हो सकता है, बट या फॉर नाउ दैट इज माई प्रेडिक्शन. For minimum I target 1 gem 1 and then after I break even. That's what I do. $5K USD. वाह. यस, तो ये पूछ रहा है कि 5K USD बना सकता हूँ कि नहीं, कि 5K USD से आई डोंट नो 5K USDT से तुझे ट्रेड करना है US डॉलर से. आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. रिफ्रेश द क्वेश्चन. और कौन सा स्विंग हाई और कौन सा स्विंग लो टारगेट करना है वो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आएगा. बट फॉर नाउ आई वुड से इवन इफ यू आर अनश्योर अबाउट विच स्विंग हाई टू मार्क, विच स्विंग हाई टू टारगेट, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर RR. 1 जम 1 पे तुम ब्रेक इवन डाल दो एंड देन इफ यू वांट लेट दैट ट्रेड गो फॉर 1 जम 2, लेट इट गो. फॉर बेस्ट विल बी जस्ट बुक इट एट 1 जम 1. Oh yeah, true that. How much do you expect per month? I do not expect anything. I expect that I'm gonna go red. Yes, of course I keep my expectation high in terms of that I wanna achieve $35,000 per year. Last year I got to 25-30K, but yeah. Yes, मेरा ही है mentorship, 1-on-1. Remember, Aniket, 1-on-1 is only mine. 8 more hours. Medas Gaming. Hello FA1. Hello Srini. Abhishek, for me it doesn't matter. I do not look at London high, London lows yet. What I look for is what is happening right now. Let's just say market ने इस high को sweep किया and now ये अगर displacement देती है, कुछ IFPGs देती है, then I can target this low. I do not care what is happening here. It gets confusing if you look at everything. So just try to look at what is happening right now in the market. Yes, 2022 mentorship is more than enough. Yeah, 4 to 5 hours is easy.
even in a week you can get it once you have experience. ES ये हाई के बहुत नज़दीक है, NQ थोड़ा दूर है, तो we can expect more upside momentum. Yes 10th को है ना? Yes. Why yes है सर? पानी में? To answer all of your questions, I do come live 1 hour early, so I can trade after that with my members live with one-on-one mentorship students. If you want me to come live in the PM session, let me know. If I'm gonna stream one day, and then if I see lots of people are tuning in, then I may start doing PM session. I have shifted to IFPG model. Yeah. साहिल के आई थिंक पेड मेंटरशिप में 3 क्लासेस है पर वीक आई थिंक, एंड ट्रेड ब्रेकडाउन देता है वो। लाइव ट्रेड नहीं है उसमें, वो ट्रेड लेने के बाद वो आपको ब्रेकडाउन दे देगा नेक्स्ट डे। डू यू यूज वाइड मॉनिटर? आई हैव 3 मॉनिटर सेटअप, सेंटर वाला वाइड है एंड 2 नॉर्मल है। PM सेशन में प्रॉफिट करोगे तो मैं आई ट्रेड ऑलमोस्ट 8 आवर्स ऑफ NY सेशन, वही है। So if I take trade, you will see that on online. What point frame do you use for bias? 15 minutes mostly. आप भी ले लो ना। Then again I have different mentorship than Sahil has. I think it's Acer. साइज क्या है इसकी? 29.5 30 इंच किन लो उसको। उतना भी वाइड नहीं है, इट्स लिटिल बिट बिगर देन नॉर्मल। I think you guys have seen it. Let me pull. Okay, let me show you my. So as you can see, this one is wider. It's not that wide. This one is normal, this one is normal, so that is my. That's a different problem to have. So that is my setup. Why is your mentorship so costly? I guess why why is my mentorship so costly? You can go ask my I used to charge way more than that. I used to charge 50k, then 120, and then now I have lowered my prices so everybody, I mean most of the people can join because of what I provide. Hello. What makes me profitable? My experience makes me profitable, nothing else. Hello Vishek and Iren bhai. Hello. You are master in NQ, right? I don't know. I try to do my best. जितना हो सके उतना. That's what I do. I don't know if I'm master or not. That is different thing. Yes, I don't know what to say about that. Even if you blow, let's say 10 accounts, it's gonna cost the same, but with me it's gonna cost you way much less than to learn whatever you learn. Do you trade anything else than NQ?
भाई बाल इधर उधर हो रखे हैं। Sorry. Yes, I do trade sometimes. Yes, sometimes gold, but I'm learning how gold works. Where can we see mentorship detail? There is nothing to see in details in the mentorship. It clearly says one-on-one mentorship, 80,000 rupees for 2 months, and you got to learn everything from me and trade with me. That's all the info you need. If you need info about me, then you can go search online on my X, YouTube, anywhere. Go to my past live stream, go ask my members जो ऑलरेडी रह चुके हैं. आई डोंट थिंक सो. एवर मैं ऐसा नहीं बात कर सकता कि एवर मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा. मे बी, बट अभी तो कोई प्लान नहीं है. थैंक्स टू निर्जल आई गेस. Isn't Nirjal has started something on its own recently? I don't know. हेलो हेलो राज, व्हाट्सअप. मैं 1 घंटे इसीलिए लाइव आ रहा हूँ कि तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो. मैंने कौन सा सेटअप लिया है कल, मैंने दिखा दिया. मैंने कल 2 सेटअप लिए थे, दोनों क्लियर सेटअप थे. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड क्यों लिए थे वो, जो मैं आज समझा सकूँ. प्लस वही चीज़ें कि देखो ये हाई स्वीप हुआ था. हाई स्वीप होने के बाद अब नीचे आ रहे थे. हमने ये 1 मिनट एफ पहली बार रिस्पेक्ट की. आई वेटेड फॉर, बिकॉज ES नहीं ड्रॉप कर रहा था. वी वेंट बैक, वी इनवर्स दी सेकेंड टाइम. इफ यू सी, सॉरी 1 मिनट, व्हाट आई एम लुकिंग एट. मैंने बोला ये पहली वाली क्यों नहीं ली थी फिर. माय बैड गाइस. ये रहे ना. हाँ, वी नेवर इनवर्स दिस 1 मिनट. वी वेंट बैक, स्वैप दैट हाई, वी इनवर्स दैट इन 1 मिनट, टुक दैट ट्रेड. स्टॉप अबाउट दिस इन्वर्जन वाली एफ के ऊपर 23 पॉइंट का स्टॉप था, 23 पॉइंट का टीपी था. हमने वो लिया. एंड देन आई टुक दिस ट्रेड ऑन माई ओन, ऑन माई लाइव अकाउंट. एंड देन या, I don't know, maybe not, I don't know about that. Everybody is free to do whatever they want to do. लूसिड में 50% ऑफ चल रहा है क्या? इफ़ यू आर न्यू यू कैन ट्राई इट आउट. इट्स 40% ऑफ. They are 40% off for new users and 30% off for the old one. नहीं, I'm not gonna be live all day 24 hours noon. I saw NY AM session trades and that's all you need. You don't need to trade anything else. When you are starting out, when you are learning, if you trade every session you're gonna lose anyways. Focus on one session, one setup and one type of trading. Do not try to master everything at once. Should we have, I like to trade both together because जब मैं ट्रेड में घुसता हूँ तब मुझे चाहिए कि दोनों इंडस्ट्रीज एक साथ फॉलो थ्रू करें, जिससे मेरे ट्रेड इजी रहेंगे. आई मीन टू गो इन माई डायरेक्शन. ओके, लाइव वाला जो ट्रेड था सेम था कि हमने पहले हाई बनाया था. वी क्रिएटेड दिस हाई, राइट. अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो एफपीजी रिस्पेक्ट हुई थी इस रिसेंट लैंड में, उस मेन एफपीजी जहाँ के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और मुझे पता चलना, इट इज़ एविडेंट कि इसके बाद वो नीचे ही जा रहा है. मार्केट हैज़ स्टार्टेड गोइंग बैक डाउन, राइट. उस एफपीजी को मैं मार्क करता हूँ क्योंकि उसके इन्वर्जन के बाद मुझे पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑटोमेटिकली हो चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी आ चुकी होगी. तो आई मार्क दिस एफपीजी. इसके इन्वर्जन पे इधर मैंने ट्रेड लिया था. हाई स्वीप इन्वर्जन, टुक द ट्रेड देयर, टुक दिस अंटिल दिस एफपीजी. बिकॉज ये जो एफपीजी थी right there, the whole area was imbalanced, right? So market came back, balanced that, and then we went back again. Just master one pair. There is no such thing.
as mastering lots of pair at once. True, yes. Which Lucid has to make buffer to get payout? I think Pro account has buffer that you need to make buffer to take payout. I think Flex doesn't have buffer rule. Yes, 50k Flex account is cheaper for new users. If you go with any other firm, it's gonna cost you minimum of $100. So yes, with code GCT you can have 30 or 40% discount. No, I don't know. ये सब नाम ही अलग है, MYM और आई मीन YM की बात कर रहा है, मुझे लगा MMXM उसकी बात कर रहा है. YM नहीं ट्रेड किया मैंने, NQNES only. I know YM is also interested. I mean interesting instrument to trade. अभी तो मुझे यही लगता है कि चलो हमने ये इन्वर्स कर दिया है, वी हैव इन्वर्स दिस राइट. पोटेंशियल ट्रेड यही बनता था अभी कि ये हमें इधर ओके टू जस्ट से NQ ने ये स्वीप नहीं किया है बट ES ने स्वीप कर दिया है, तो देयर इज SMT ऑन NQ. वी इन्वर्स दिस FPG, वी टेक ट्रेड हियर ऑन द लॉन्ग साइड. जो ट्रेड बन रहा है वो दिखा रहा हूँ, मैंने लिया नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो गाइस. एंड वी कैन टारगेट सम हाइज हियर एंड देयर. तो वही एक ट्रेड बन रहा था बट मेरा रूल एक ही है कि आई डू नॉट टेक ट्रेड जस्ट बिफोर माई एनवाई सेशन. एपेक्स को बैन क्यों किया था, कैन यू एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स? देयर वाज इश्यू विद सम वाईफाई और सम के. एक वाईफाई पे मे बी कोई इसके घर पे गया था सीखने के लिए, and then two Wi-Fi got connected with one Wi-Fi got connected with two PC and then they tracked it, something like that. It was some issue with them, policy issue, but it's fine. Apex is good guys, do not worry about that, you can trade with them. You learn from ICT channel and how much time? What I took as a time, you should not even think about that. तुम्हें अपना देखना है, तुम शुरू करो देखना, ट्राई करो समझने का. How to forward test? You can sign up for any forward test, back testing. फॉरवर्ड टेस्ट करना है तो तुम नास 100 को देख लो, उसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लो. बैक टेस्टिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर पे साइन अप कर लो, 1 वीक का तो फ्री मिल जाएगा, तब तक कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ड्रॉडाउन एंड एंड ऑफ द डे? एंड ऑफ द डे जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है वो तुम्हारा सेशन ख़त्म होता है, पूरा एनवाई सेशन ख़त्म होता है उनके टाइमिंग्स बताऊंगा इस बात में कि 5 बजे जब ख़त्म होता है, 4:30-5 बजे, देन इट्स गोना ट्रेल ओनली. बट इंट्राडे ड्रॉडाउन इज़ लाइक जब तुम ट्रेड में जा रहे हो, जैसे जैसे ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिट में जा रहा है वो ड्रॉडाउन तुम्हें पीछे पीछे आता रहेगा. तो वही चीज़ है. Lucid Flex you can request payout minimum $500 or 50%. Lucid Flex में या 50% ऑफ द प्रॉफिट तुम निकाल सकते हो. तुम इन्फो दे रहे हो या मांग रहे हो वहीं पर भाई? मैं कंफ्यूज हो गया. मुझे भाई ने ट्रेडिंग 3-4 महीने में प्रॉफिटेबल बना दिया और 6 मंथ में पे 10K पे पहुंचा दिया. निजल उसमें मेरा एक अकेला का हाथ नहीं है. आई मीन यू वर्क हार्ड टू, बट अगेन दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू. Tell you what to do, point finger where you need to go, and after that तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ, सीखना पड़ेगा खुद से थोड़ा. बट या क्या हम अलग अलग वाईफाई से कनेक्ट करें तो कोई, आई कैन नॉट से दैट. सी if I comment something and then you do that and then you get banned, then it comes to me. हैप्पी न्यू ईयर महाजन भाई, आप आ गए क्या बाली से वापस? Having a goated mentor is all you need. I think yeah, any good mentor will work.
but there are very few, so be very cautious when you take up to any mentor. Hello everyone. Please explain IFPG. Just go back little bit. I did explain IFPG. मैं इस एफपीजी को क्यों मार्क किया, क्योंकि हम जब नीचे आए वी रिस्पेक्टेड दिस एफपीजी एंड देन वी वेंट टू दैट लो. ऑफ कोर्स हमने वो लो स्वीप नहीं किया, बट इफ यू लुक एट ईएस हमने वो लो स्वीप कर दिया था, राइट. तो लेट्स जस्ट से दैट देयर इज अ एसएमटी, सो वी डू नॉट नीड दैट लो टू गेट आउट, राइट. अब यही एफपीजी रिस्पेक्ट करके वो मार्केट नीचे आया, तो आई वांट इट टू market to close above, and this is कहाँ गया, yeah, this is where I would like to enter as a long, putting stop below here, right, and targeting something around here. I do not know, Raj, I do not know. Okay, Noon bhai, see you there. And I'm not saying anybody should join or whatever. Until unless you are ready to work for it, nothing gonna work out for you. Nobody can tell you what to do and then it's gonna work out for you. Nothing like that. I don't know. I don't track my win rate, but it has to be something around 65 to 70%, right? And my average win RR होगा कुछ 1.5 के around. गिन लो. मैं 70% लो बॉल कर रहा हूँ, but it is what it is. Yeah, you gotta contact firm and ask them. That's way better than asking me. And that is why I do not allow anybody at home, right? I do not allow anybody to join my Wi-Fi. I'm planning to get Wi-Fi for only this setup, not even for my phones. So mistakenly I don't get banned from anybody. नेगेटिव आरआर की विन रेट जब मिड ऑफ द ईयर चल रही थी 90%, 90 to 95%. We used to rarely lose trade. End of the year it started getting bad, and that's why I switched strategy. Why you guys want to do that? 2 laptops? Yes, you can trade 2 laptops, it is fine, but कोई किसी और का अकाउंट लॉगिन मत करो बस. Why should we, I mean, when to scale? Okay, I mean, मैंने कल भी बताया था, अगर एक अकाउंट से तुम 3 पे आउट निकाल रहे हो, 3 पे आउट साइकिल, राइट, एंड दैट इज टू मिनिमम $1000 पर पे आउट, राइट. लेट्स से तुमने 50 के अकाउंट लिया लूसिड का, लूसिड फ्लेक्स का, तुमने बनाया $2000, अब तुम पे आउट निकाले हो $1000. So I want you to repeat this cycle on the same account before scaling it to something else. I want you to fuck. Okay, yeah. So I want you to do the same thing for 3 times before you add more account. What happens by doing that is के तुम्हें पता चल जाएगा कि are you actually profitable or you got lucky there, right? So स्केलिंग में ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन तुम ट्रेड करो एंड देन जिस दिन तुम स्केल करो एंड देन यू ब्लो अकाउंट, एंड दैट बिल्ड्स योर बफर टू बाय अकाउंट्स, एंड प्रेशर बहुत कम रहेगा. नहीं, he has shifted to 1 as well. भाई YouTube पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें इंट्राडे ड्रॉडाउन के, and most of the firms I trade with does not have intraday drawdown. They have end of the day. But let me just explain for the sake of explaining now that you have asked. So let's say तुम trade ले रहे हो, you are taking trade here, right? You have $2000 of drawdown before तुम ट्रेड में गए, उससे पहले तुम्हारे
$2000 का ड्रॉ डाउन है तुम्हारे पास। अब लेट्स से ट्रेड चल रही है, वो नीचे गई माइनस में, तुम्हें वो उस सीन में तो तुम्हें पता है कि ड्रॉ डाउन कम, तुम्हारे पास इधर तक का ड्रॉ डाउन है, इधर हो रहे -$2000। अगर मार्केट इधर आई तो तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा, राइट? दैट्स मच यू नो कि नहीं तुम लॉन्ग में बैठे हो। लेट्स जस्ट से दैट मैं ऐसे समझाऊंगा जैसे पाँचवीं कक्षा में हो तुम, ओके? एंड देन लेट्स से वी स्टार्टेड गोइंग अप एट दिस मोमेंट, राइट देयर तुम $500 अप हो, तो तुम्हारा ये जो $2000 का ड्रॉ डाउन था, अब वो आ जाएगा इधर कि अब तुम -1500 देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम 500 प्लस हो इधर, राइट? अब ये नीचे आया और जीरो पे तुमने प्रॉफिट काट दिया, 0 तो दैट इज नॉट योर ब्रेक इवन ट्रेड। यू लॉस $500 वर्थ ऑफ योर ड्रॉ डाउन, नॉट अकाउंट बैलेंस बट ड्रॉ डाउन कम हो गया आपका, समझ रहे हो? और दैट इज दैट्स अ सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन। डू नॉट टेल मी टू एक्सप्लेन वे मोर बिकॉज इट साउंड्स जस्ट डम। अब जो हो गया, माई सेल्फ जो नाम है आपका, अब जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। अब जो 900 का ड्रॉ डाउन है उसके साथ तुम टारगेट रखो कि एटलीस्ट तुम नेक्स्ट 2-3-4 दिन में $1800 बनाओ 900 के ड्रॉ डाउन पे, राइट? एंड ट्राई टू टेक, ऐसा मत सोचो कि अभी मैं वो $4000 बना लेता तो मैं कितना अब होता, मेरा पे आउट आता। अब जो हो गया हो गया, छोड़ो उनको। अब तुम्हें फोकस करना है कि अब क्या कर सकते हो, 900 का ड्रॉ डाउन बचा है उस पर तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि जो पैसे बने ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या मतलब है। Yeah, you can do that, Prasad, Vara Prasad. If I'm saying it right or not, I don't know, but yeah, you can do that. But as long as you are not logging in two accounts detail in one laptop, you are okay with that. Any amount, even if you make $10, it's also good, Varun bhai. But I think on average, if you take 50K account, you gotta learn how to trade prop firms in a way that you get to the payout most of the time. That's where people make mistakes कि वो थोड़ा कम बना लेते हैं on the good day and then खराब दिन आता है तब बहुत सारा लॉस ले लेते हैं, and that is where most of the people go wrong and that is where I come in. तब जो 80,000 की मेंटरशिप की प्राइस है तब वो वर्थ होती है। So yeah, at least try to target $600-$700-$800 day. I don't know कहाँ जाएगा। Yeah, 50K is the best account out there. लूसिड के इवाल रूल्स उनकी वेबसाइट पे हो गई, बट मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि प्रो अकाउंट आई थिंक there is no consistency to pass it. Flex account there is 50% consistent to pass it. So if you want top step account, same as top step account but cheaper, go with lucid flex account 50K, one of the best out there. वो दीपक भाई वो फेज है, वो चला जाएगा आपका, आप सीख जाओगे कि एक्चुअली ट्रेड में कैसे इम्प्लाई करना है जो आप सीखे हो। $200 is very less I think. एक खराब दिन, एक खराब टिल 10 तुम अकाउंट उड़ा दोगे। नहीं, आई डू नॉट ट्रेड DXY.
On 50k, if you have enough experience plus if you know what you're doing, trading with minis is a better option. लोग तुम्हें कुछ अलग बोलेंगे ऑनलाइन, बट दैट इज द ट्रूथ. 80 के लेने के बाद भी ब्रो बोलेगा आई डोंट नो कहाँ जाएगा. इमाओ. हा हा हा. फनी. भाई वो तो मुझे भी बैन किया था एपेक्स ने. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. मेरा $16,000 का पे आउट पेंडिंग था उनके पास. अभी तो आपके पास पूरा अकाउंट बचा है नून भाई. 1900 डीडी इज लाइक फुल डीडी. कुछ हुआ ही नहीं है. नॉर्मल अप्रोच. लेट्स गो डब्ल्यू श्री सिंह. कंटिन्यू द मोमेंटम. आई यूज रोड. आई डोंट नो पाऊँ तो दिस वन. टेक अ स्क्रीनशॉट आई गेस. Yes, I am. I don't know. I will. Maybe I won't. Rajbhai. I'm not gonna announce giveaway upfront because that gets me bot views. People put bots into this. Yeah. I have less than 2% of my audience from Gujarat, Medas. Do you think everybody's gonna understand Gujarati? Even Hindi. Lots of people I mean they come from the place where Hindi is not their first language. I do not take pre-market trades. I'm here to just explain how I trade every day. What I took yesterday as a trade. कल मैंने कौन सा ट्रेड लिया था वो वाला से. कोई सॉल्यूशन नहीं है. नाइस वन. हिंदी भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, गुजराती भी बोल सकता हूँ. आई डोंट केयर. बट इंग्लिश गेट्स एवरीवेयर. आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल. इवन मेरी टूटी भी इंग्लिश समझ जाते हो तुम लोग तो बढ़िया है ना. क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है? I will try to come live every day 1 hour before NY session. So yeah. No, I'm very close to Ahmedabad. No, we do not stay together. Abhinav is in Gorakhpur, Sahil is in Delhi, and then I am from Gujarat. Why not trading live? Because this is not my trading hours. NYAM session, why I do not come live? Because I'm trading with my members. NYAM session, so yeah, I get distracted on stream. भाई जिम करने के लिए पहले थोड़ा खा पी लूँ. खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा अभी तो. फिर जिम कर लेंगे. देख तो रहे हो कितना पतला हूँ. Do you trade with bias? I like to have a bias, but see if market is going against my bias and let's say I see a setup against my bias, I'm gonna take it because I cannot be right all days with my bias, but my setup is most of the time right, so I'm gonna take it. देखते हैं कार्तिक भाई, देख लेंगे. You use RTH ETH? No. Internal
एक्सटर्नल। ये सारे जो टर्म्स तुम बोलते हो, एम एम एक्स एम एम बी एम और भाई सेल मॉडल और वॉट एवर, वो सारी चीज़ें बनाई गई है। द ओनली कोर मॉडल यू नीड टू लर्न इज 2022 मॉडल, एंड वो सारी चीज़ें इसके ऊपर बनाई गई है। तो लोग वहीं सीखने जाते हैं पहले, नॉट दैट दे वांट लर्न द बेसिक्स। मुझे कुछ अलग यूज़ करते हुए देखा है तुमने? 2-4 लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस पर ही ट्रेड करता हूँ। इवन इफ यू गो ईयर 2 ईयर बैक ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स, मैं यही सेम चीज़ करता होगा, तुम जाके देख लो। क्या स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मेडस भाई? कुछ दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? इधर क्या दिख रहा है? ETS दिख रहा है? राम 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 राम। मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ जिंदा। Fucking tired as shit. It is not delusional at all. 100K a year is very much possible. But on your first year, it is not possible. Don't even try to push that much. Just take it slowly. Build your roadmap. In next 2-3 years, you will hit that mark. It is not delusional at all. Yes, it is great. I think first year as profitable, just try to target 20, 30, 40K. That will give you peace of mind. Plus तुम ओवर ट्रेड नहीं करोगे. I'm at home. I'm at home. वो मोमेंटम बनाना पड़ता है 100K पर 100K ईयर के लिए। पहले 50K करो, 60, 70, 80K, वो मोमेंटम बनाओ। अरे भाई आकाश भाई, ऊपर तो कितनी बार बोलूं, लेबल लगा के रखो क्या ऊपर? मार्केट इज चॉपिंग नाउ. My first year was $65,000. Second year was $237,000. Last year was also $200,000 plus. Because I like to trade in NAS. What is that question? Doesn't make sense. Yes, I do take that payouts in bank. I have no issue with many banks. Hello Hans, welcome to that. I do not use order blocks anymore. After expense, it's gonna be somewhere around 145, 150. I come in 0.1 percentage, not even 1%. GCT Gujarat Craft Trades. Yeah, everything is okay with futures firms, guys. I don't know why people keep asking me. In first year, I invested 30K to make 65.
How do you convince your parents to do full time? You never gonna convince them to do it full time. Once you start earning, they will understand. You cannot make Indian parents understand that that is a career in this. Doubt तो सबको होता है कार्तिक भाई. You just gotta. I mean, I do not have doubt about me being profitable in future. Yes, maybe 1 hour 2 hour ऐसा हो जाता है जब frustrate हो जाते हैं. You question it, but overall I never used to question myself. Full confidence. गेमिंग चैनल का भाई मैं बहुत ख़राब हूँ गेम्स. आई प्ले वेलो एवरी डे, वेलोरेंट, बट अगेन आई एम वेरी बैड एट इट. आई जस्ट प्ले इट फॉर द फन. एनी बैंक कार्ड विल वर्क. ICICI, एक्सिस बैंक, दोनों में से किसी का ले लो, चल जाएगा. उदय भाई मज़े कर रहे हैं लाइफ में, करने दो उनको. If you're 19 years old, you have lots of time to even grow. So I guess take it slow, don't rush it. Make small targets and then try to achieve them. Keep small targets. Rupee card will not work. Master or Visa card will work. मेंटरशिप के बाद मैं इधर नहीं बोलता क्योंकि भाई आई नो इट इज़ फ्री प्लेस एंड लॉट्स ऑफ पीपल गोना हेट ब्ला ब्ला ब्ला. बट आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूँ. 80 के 80 नास. व्हाट डू यू थिंक इज ओपन ऑन माई चार्ट? 15 के CA के पास तो फाइल करने के लिए जाना ही पड़ेगा आपको. बट इतना अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मार्च में चले जाना. एटलीस्ट 5 to 6 ट्रेड्स रवि. डेबिट कार्ड और वीज़ा चलेगा, हाँ चल जाएगा. बट हाँ मोस्ट ऑफ द फर्म्स में चल जाएगा. लूसिड में तो चल जाएगा, आई नो दैट. मैं गुड़गांव लास्ट वीक ही 2 वीक पहले ही था. एवरीथिंग वाज ओके. श्री सिंह भाई, यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई डोंट नो, माय चैट हैज. अगर कोई इश्यू आ जाए, 50,000 नहीं तुम $60,000 का एक सिंगल पे आउट ले लो, विच नॉट गना हैपन. कुछ नहीं इश्यू आएगा भाई, चिल मारो. तुम्हें कैसे लगता है हम इतने सारे पे आउट्स कैसे ले रहे हैं? हमारे कोई कैश आता है बैंक से, उधर से, US से. चिल मारो ना. पहले पैसे बनाओ, फिर इश्यू को सॉल्व करना ट्राई करो. लास्ट ईयर 2025 की बात कर रहे हो? आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर ट्रेडिंग गोल्ड और नॉट. My goal is to take 200K payout after tax this year. Last year I made 13K to prove my parents I'm 19 years old. That's a good target to have. Good luck. Keep me updated. I had no capital when I started. I was in debt. मुझे 2 साल, डेढ़ एक, आई मीन NQ को देखते देखते 6-7 महीने हो चुके थे. एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी. बट ओवरऑल ट्रेडिंग तुम सोचो तो 2 साल लेके थे. एवरी ट्रेडिंग, क्रिप्टो, CFD, एवरीथिंग. ओके बट हाथ मत लो पे आउट. क्या आप यार श्री सिंह भाई, यार आप बात कैसी करते हो ना, आंसर करने का मन नहीं होता. फॉलो करते हो तो करते रहो. Everything suits me guys, as long as it makes me money. I used to work. See,
There is a long story which will come out as a podcast next week. You can watch it. I'm gonna post link somewhere around here next week, so you can see a lot a month, a lot. What's the benefit joining live if you are not? Do not join, Kuntar. Bye. Goodbye. Thank you very much for joining. No, I never traded Indian markets. I'm here to just answer your questions, guys. Did I ever say that I'm gonna take trade? पॉडकास्ट नॉर्मल वाली जो जूम पे होती है वही, वो वाली पॉडकास्ट नहीं. But you will see lots of info in that. Damn, I hope you get out of that. You're gonna need lots of, you're gonna have to put in lot more than what you think it's gonna take. Work 24 into 7. I trade as an individual. I I analyze chart in the starting of the stream. You can go back and watch it. Thank you. I cannot reveal that, but let's just say not lot. Since December start to today, I have taken only 2 to 3 losses live trading with my members. So you do the math. I have taken one trade at least a day. No, I'm not yet millionaire in cash, of course. If we count everything that I have, blah blah blah, then maybe. That is not the thing to reveal. Not yet, Thomas. We haven't executed, and I'm not planning to take any trades until market open. I haven't bought, and the thing I have bought most expensive, I cannot say it right now here, and I'm not willing to say that. मैं ना पैसे कमाता हूँ ना मैं पैसे उड़ाता हूँ ना कुछ. 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, बहुत है. मुझे ना गाड़ी लानी है, ना BMW लानी है, ना कुछ लानी है. Alright bro, see ya. कुछ कार्तिक भाई कुछ नहीं है मेरे पास भाई. जीरो. समझ रहे हो आप? जीरो. ये हुई ना बात. Yes, they tend to move them in live, not ban. Ankis. तो इतनी मेहनत for just for fun. Fix gaming. Just for fun. And I do not tend to reveal what I do, what I can afford, what I cannot afford, what I own, what I don't own. Because you are here for trading, not here for what I own, what I don't own.
व्हाट आई मीन, मैं कितने पैसे वाला हूँ नहीं हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। इफ आई एम मिलियनर और नॉट, व्हाट इट्स गोना मेक डिफरेंस टू योर लाइफ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। आई एम गोना ट्रेड आफ्टर मार्केट ओपन। मैं इसीलिए आता हूँ कि मेरे व्यूज़ दे दूँ जस्ट बिफोर मार्केट ओपन, सो यू कैन यूज़ इट टू ट्रेड प्रॉपरली। मैं तुम्हारे प्रीवियस डे के ट्रेड्स दिखा देता हूँ जिससे तुम समझ पाओ कि ये ट्रेड लिया था इसने तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हाउ माई डे वेंट यस्टरडे। मैं इतना बता सकता हूँ। SMT is like जो let's say pairs of indices, let's say NQ and ES, they tend to move together in the same direction all the time, right? So there are rare cases where NQ will take out the high and ES won't. So when that happens, it is called SMT. Simplest explanation I can give you as a beginner. There are more things goes into the deep, but again we don't need to go there. No, average guy. कुछ नहीं अंकित भाई, it's everything is gonna happen. I was also frustrated, I was also in a dark place when I started out. Everything is gonna, मैं कुछ भी इधर बोल दूंगा कि ये कर लो वो कर लो, तुम ऐसे नहीं करने वाले। तुम you gonna eat shit, you gonna eat losses every day, you gonna learn from your losses. एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा enough is enough and now I need to follow rules, I need to do what I need to do to become profitable, and then you gonna gradually become a profitable trader. ना कि एक दिन में कुछ ऐसा स्विच फ्लिप होगी कि तुम प्रॉफिटेबल बन जाओ। तुम कितने भी पैसों का मेंटरशिप ले लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ऐसे नहीं। जो फेस हर एक ट्रेडर को के थ्रू जाना होता है वो जाना ही होता है। So don't worry, it's a phase, it will pass. Just keep working to get better every day. I trade only 2022 model, nothing else. Smart money, I guess. So mainly I use 2022 model. That's what people call smart money concepts. But again, it came. I think I'd like to believe that it comes from ICT concepts, and because I learned from ICT, right? So people try to, then they rebranded it to SMC or whatever. So yeah, I do not know, and I do not care. Why 1 plus 1 is 2? I don't need to know that. I just know that 1 plus 1 is 2. If I make profit in the market and it comes to my bank account, nobody's gonna ask me what's the full form of SMT, because not ICIC, my bank is ICIC bank. Not they're not gonna call me what's the full form of SMT or anything like that. I guess you can search it online if you wanna know, but I do not know that. I'm sorry. How often? If it's there, I'm gonna look at it. If it's not, then I'm not gonna look at it. 2020 में कौन कौन ट्रेड कर रहा था? What are you asking? किसी को दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। वो दुबई इसीलिए जाते हैं कि लाइफ स्टाइल दिखाने के बाद एक्सनेस का पैसा बढ़ा सके, अफिलिएशन बढ़ा सके, और एनी ब्रोकर। यू डू नॉट नो व्हाट गोज बिहाइंड द क्लोज्ड डोर, right? You guys are not in contact with most of the influencer, but I am, who are on top, right? They make shit, I'm saying shit load of money through affiliation, that जो तुम्हें अकाउंट्स दिखाए जाते हैं ऑनलाइन 20, 30, 40, 50,000 डॉलर के, इवन $100,000 के, वो उनके लिए कुछ नहीं है, बिकॉज दे मेक 100 times more in a year.
through affiliation. So they do not care about blowing those accounts, blowing that money. And एक दिन अगर बड़ा ट्रेड हो गया उसमें से, then they come show you this, look at this. And most of the Indian community is that stupid that they start following that guy, भगवान बना लेते हैं. I have been trading live since 2023. Every single day I have traded live with my members. Go ask anybody. Maybe once in a while एक मंथ का मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बट एवरी फ्रीकिंग सिंगल डे मैंने लाइव ट्रेड किया है. शो मी वन गाय दैट डज दैट कंसिस्टेंटली. वही चीज़ है. And just because we speak truth about market, we speak truth about platforms, how to trade them, we do not get the views. Views किसके लिए आते हैं कि भाई गाड़ी ले ली, उसका डाल दिया, कि कुछ भाई दुबई चले गए, उसका वीडियोस डाल दिया, उसके व्यूज आते हैं. और वो भी उनकी गलती नहीं है, गलती ऑडियंस की है. what they like to see. I'm not talking about anybody, it's just the usual. It can be the case if you go on Patrick William stream, उसके पास पीछे cars पड़ी है. Why? Because people like to see that. Even he doesn't want to buy those cars, but वो करता है just because it's good for the business. Yeah, I don't journal VK. इतनी घटिया ऑडियंस आई हैव नेवर. आई यूज्ड टू लिव इन यूके. आई सॉ ट्रेडर्स इन यूके. आई नो मोस्ट ऑफ द यूएस इन्फ्लुएंसर एंड देयर ऑडियंस. द आई डोंट नो, लास्ट प्लेस पे जो आती है, दैट इज आवर ऑडियंस. आई डोंट नो व्हाई. नो, आई एम नॉट गोना बाय एनी कार्स, सुपर कार्स here. Where I come from, I being taught to not waste money. मे बी इन फ्यूचर वेयर आई हैव फक यू मनी, के जहाँ पे मैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, $100,000 $200,000, तब मैं कर लूँगा. अभी तो उतना तो मैं ईयर में बना रहा हूँ, $200,000. वाई एम गोना स्पेंड $50,000 ऑन वन कार? दैट डजंट मेक सेंस. आई यूज्ड टू वर्क एंड स्टडी इन यूके, पार्ट टाइम वर्क एट गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन, नाइट शिफ्ट्स. Alright guys, there's 1 minute to market open, so I'm gonna go. Thank you guys for joining in. We're gonna continue talking about these facts tomorrow, but I'll see you guys tomorrow. Thank you for joining. Bye bye. Take care.